When the world is heading towards digitizing education, internet has become a millennium crisis in a developing country like India. Its diverse culture and different topography has been a boon for many, but ban in terms of connectivity, be it road or cell phone network. To get more zest of it, we travel to Tato, located in the easternmost part of India. Tato is one of the newest headquarters of Si Yomi district, Arunachal Pradesh. Now, a few weeks ago, the youths of the district demanded for internet connection in the social media and also led a peaceful march for better connectivity. So we interacted with Jura Diru, General Secretary of All Si Yomi District Student Union, to get more insights of the problem. यहाँ में कितना से कितना क्लास तक है? क्लास 10 तक है, 1 से 10 तक है। तो 10 का बाद फिर बच्चा लोग कहाँ जाते हैं? कोई आलो तानगर फर्दर के लिए ना, और मेचुका में हमारा एक क्लास 12 तक है। उसमें स्टाफ भी है, देख सकते ना। सोरा सर, ये टीचर को आता था, जल गया, उसका बाद से कुछ रिपेयर ऐसे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का टीचर अभी कहाँ बैठता है? यहाँ का टीचर अभी पहले जैसे बताता, रेंट नहीं बैठ रहा है। This was actually a girls' hostel. So what happened? Now the teachers are staying here because there is no टीचर क्वार्टर। Yeah, there's no teacher quarter, and some of the teachers are staying in a rent. And I think one of the reason why this place is converted into teacher quarter, because I think there's just very less enrollment of girls student out there. That's why. So we're moving towards smart class. Let's go and see how smart it is. पुराना स्टाइल में आजकल नहीं होता है कि बोर्ड में लिखा के बोल के बारबली पढ़ा के, ऐसे नहीं होता है। तो आजकल मैक्सिमम तो बाहर साइड में तो देखने से वीडियो से ही ज़्यादातर पढ़ाया जाता है ना, इसलिए तो स्मार्ट क्लास होता है ना। तो उस तरह का जो है ये निष्ठा जो है शुरू किया है, पर अभी तक इतना तातो में एक्टिव नहीं है। एक तातो में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है। शाम को थोड़ा बहुत 2-3 घंटा के लिए आता है, तो शाम में कौन जाके स्कूल में काम करे? लड़के एनरोलमेंट ज़्यादा है? लड़की थोड़ा कम है। अगर क्लास 10 में उस दिन हम ये लिस्ट को मंगाया था, यहाँ में लड़की लड़का सेग्रीगेशन नहीं है टॉयलेट में? नहीं, सब साथ में? सब साथ में। स्टाफ लोग भी उधर ही जाते हैं, टीचर्स के लिए भी वो सेपरेट नहीं है। It's for both boys and girls, and I wonder how teenage girls they use this washroom. I mean, girls they need some privacy, right? There's just single common washroom for everybody, even teachers. This is the condition out here. This is far more better than what I have seen in the interior villages. But I think you can imagine that if this is the scene out here in the district headquarters, what would be the situation out there in the much more interior villages, na? अगर यहाँ में ऐसे तो अंदर और बस्ती का क्या हालत होगा? वहाँ पे तो बस्ती में रहे। So now I really wonder, like, this year is going to be education. I mean, this year is education year, right? So how will the government really implement it? Like, we are already at the end of the 2021, so I think it's going to be quite a very big challenge for the government. As you have seen that smart class, it's completely redundant. अभी अटेंड किया है वो स्मार्ट क्लास? वो उधर में देखो ये लोग मालूम पता भी नहीं है स्मार्ट क्लास है बोल के। क्या है? कल का पता है? प्रोजेक्टर क्या है मालूम है? ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे निकल के बड़ा से टीवी दिखाई नहीं देता है? तो वहाँ में प्रोजेक्टर स्मार्ट क्लास है बोल के। हाँ। कभी किया है तेन? एक बार कब? वॉशरूम कैसा यूज करता है? सब कॉमन? सब कॉमन से यूज करते हैं वॉशरूम? तकलीफ होता है क्या?
मुझे घर से ले गया, घर से करके आते हैं। So after a conversation with Jura, we figured out that it's not just the connectivity, but the problems in the area was way beyond what we fathomed. और पूरा टाटो सर्कल ना, टाटो सर्कल वो नीचे बस्ती तक है, वो पहले बस्ती ना नीचे में एक तो वेलकम टू मेचुका लिखा है ना उधर, वहाँ से शुरू है टाटो सर्कल, वहाँ से टाटो यहाँ तक टाटो सर्कल है। विलेज 11 विलेज है हम लोग का। 11 विलेज हाँ 11 विलेज है। तो उसमें कितना पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन 2000 कुछ है। 2000। और ये एरिया बस्ती में? यहाँ में 800 हाउस होल्ड 800 कुछ है, पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, 1500 कुछ है। 1500 पॉपुलेशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, नहीं सकता है, क्योंकि हाइडल छोटा मिनी हाइडल है उधर ना। लाइट अभी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोग का 2 पेज में बांटा हुआ है। रात को आता है तो लाइट तो कितना बजे? दिन को नहीं आके। सिर्फ 4 घंटा देता है। सिर्फ 4 घंटा लाइट होता है? नहीं अभी हम लोग अल्टरनेट करते हैं ना। 4 घंटा हो। कहाँ से 4 घंटा? जैसे कि अभी 2 पेज करके ना, विलेज और टाउन करके, टाउन को जब 4 बजे से 8 बजे तक देते हैं ना, तो विलेज को 8 से सुबह तक देगा। अच्छा। फिर हम लोग को फिर 8 से सुबह तक देने से, टाउन को देने से विलेज को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, अल्टरनेट एवरी डे। नहीं वो 4 घंटा ही है, उसमें हम लोग कर लेते हैं शाम को, दिन को तो लेकिन नहीं देते। लेकिन कमी है रे। कमी तो है। ये हम क्योंकि एक टेक्निकल स्टाफ है तो ना, टेक्निकल स्टाफ होने की वजह से हमको मेन लाइट चाहिए। वैसे आपका नाम क्या है? तापर तापिंग, कैसे स्पेल करते हैं? TAPER तापर TA PING। अच्छा। और आप यहाँ का लैब टेक्नीशियन है? जी सर, जी मैम। यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमको एक ये इन्वर्टर प्ले कर रहे हैं नीचे में। मेरा एक अपना कुछ है ना क्लिनिक है, जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस होता है कुछ पोस्ट टेस्ट को वहाँ जैसे कि पोस्ट ये वहाँ में कर लेते हैं, क्योंकि रात को तो वो लोग का सैंपल को आप अपना घर ले जाते हैं? हाँ अपना घर लेके जाते हैं। तो आपको तो ऐसा में से आपको भी इन्फेक्शन लगने का रिस्क है तो? हाँ वो तो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है कुछ बताया, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन तो नहीं है, तो वही ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि लाइट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो हम खुद इन्वर्टर रखा हुआ है ना, वो घर में इन्वर्टर आप खुद खरीद के खुद खरीद के रखे, क्योंकि ऑन पब्लिक मतलब सेफ्टी पब्लिक के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। यहाँ से नीचे तो पहने है, यहाँ से नीचे पहने है मेरा ना जुरिडिक्शन किचमेन एरिया में, तो यहाँ से ऊपर जाने वाला लुंगता है, तो ये मेरा दोनों जुरिडिक्शन में आता है। तो वहाँ से फिर सैंपल आता है क्या? आता है। कैसे कलेक्ट करते हो? वहाँ से हम मतलब एवरी फोर्टनाइट को कलेक्ट करने के लिए देता है, जो फीवर केस होते नहीं, हम नहीं जाता है, आशा लोग कलेक्ट करके हमको भेजते हैं। हाँ जैसे मलेरिया सैंपल इवन, तो फिर यहाँ से आप फिर रिपोर्ट भेजते हो? हाँ रिपोर्ट भेज देते हैं। तो वो रिपोर्ट जाने में फिर कितना टाइम लगता है? 1 दिन लग जाता है। टीबी पेशेंट भी? टीबी पेशेंट तो अभी तक नहीं मिला, जो टीबी पेशेंट है वो यहाँ आ जाता है। मलेरिया पेशेंट का? मलेरिया का पेशेंट मिला। बस्ती में ज्यादातर क्या है बीमार अभी तो? यहाँ में तो ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ में तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर ज्यादा है। 1 बजे 2 बजे तक खुलता है, असली में 4 बजे तक खोलना है ना, हम लोग 2 बजे से में चला जाता है। तो विलेजर तो शाम को नहीं आता? नहीं आता है, विलेजर लोग तो पूरा दिन को तो लोग केटी जाएगा ना, ऐसे से होता है। वैक्सीन डे हम लोग 2 दिन रखते हैं, सैटरडे और मंडे का, सॉरी ट्यूसडे और सैटरडे का, उसका बच्चा लोग का। अभी देखो ना, एम्बुलेंस रखने उधर तो लैंडस्लाइड हो गया, तो एम्बुलेंस कहाँ रखते हैं? नीचे में रखा है वो उधर, तो पेशेंट को पूरा उधर से उठा के लेके आना पड़ता है अगर इन केस इमरजेंसी हो जाने से। हाँ तो क्या करेगा, रास्ता ब्लॉक हो गया ना। आर्मी भी है, आर्मी आधा मदद करता है। नहीं ये रोड क्या था मतलब अभी भी है बोलने से, लेकिन वो ब्लॉक को क्लियरेंस नहीं कर दे रहे ना। ये से इससे ही पहले जैसे पहले बताता है, बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट को लीड करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाता है, आईबी जाता है। आईबी बोलने से अभी फिलहाल आईबी में तो डीसी सर ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है, नाम से ऑक्यूपाइड किया है, लेकिन रहता तो मेचुका में ही है। और मेडिकल को लीड करते हैं, और कई सारा डिपार्टमेंटल ये को भी, हाउसेस को भी लीड करते हैं ये को, लेकिन अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट वन ईयर हो रहा है मेरा ख्याल से, ये वो होके लैंडस्लाइड होके। और हार्डली आप अगर ऊपर से देखेगा तो पता चल जाएगा, 20 मीटर से होगा। सिम तो सिर्फ BSNL है फिलहाल ना, और
BSNL का तो आपका सिर्फ GSM वही है सर्विसेज है ना, और 3G 4G ये सब का तो है ही नहीं, कुछ भी है, इंटरनेट ही नहीं है। पर वीसेट जो लगा है वो चलता है। वीसेट भी हमारा यहाँ ये 4 जगह इंस्टॉल्ड है ना, आपका मेडिकल में एक है और ये ऑफिस में है, और स्कूल का भी फंक्शन नहीं हो रहा है ना, और ये ऑफिस का भी फंक्शन नहीं हो रहा है, DC ऑफिस का, मेडिकल का फंक्शन हो रहा है ना। इंटरनेट जो ना यहाँ में सिर्फ BSNL है ना, BSNL पब्लिक के लिए नेट नहीं है तो ना, हम लोग ऑफिस जो ऑफिस है ना, ऑफिस को हम लोग वाईफाई कनेक्ट कर दिया है ना, ऑफिशियली काम के लिए, नेट के लिए, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर वो के लिए। इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट बस इंटरनेट ही चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या आपको इंटरनेट चाहिए? क्यों इंटरनेट चाहिए? वो ना इंटरनेट आने से आप क्या करेगा? क्या भी करेगा, ये PUBG खेलेगा, बस PUBG के लिए जी रहा है। कौन आ रहा है मालूम है आप लोग को? चीफ मिनिस्टर हाँ? चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू पेमा खांडू कहाँ का चीफ मिनिस्टर है? हाँ? CM को तो मालूम नहीं है आ रहा है, बस कुछ चेंजेस लाएगा लगता है तातो में चेंज नहीं होगा। तातो को कुछ इसमें हम लोग को कागज दिया है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। मोदगांव में चुका में बहुत दिया, यहाँ में तो कुछ सिर्फ पिलर स्टोन बनाएगा बोले। आपका स्कूल के लिए कुछ करेगा लगता है? क्या करेगा लगता है? उनका हाथ से रिबन खींचेगा। इसमें पहला है BRT रोड टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो, पहला इनॉग्रेशन होगा। ये BRT रोड से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ में सेक्रेटरी बनेगा, अगर CM आने से ना, आप का CM को एक बात बोलो। सेक्रेटरी बनेगा, वहाँ पे एक रोड जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन करेगा। अच्छा बना दो बोलेगा। और दूसरा है तो मैं डिस्ट्रिक्ट डाल दो वाले। कंस्ट्रक्शन तातो में डिस्ट्रिक्ट डाल के रखा है। इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटनरी एड सेंटर एट पादुसा विलेज, पादुसा विलेज में एक वेटनरी एड सेंटर खोला जाएगा, उसका भी CM यहाँ पर इनॉग्रेशन करेगा। तीसरा है पूरा आपका पूरा गद्दा गाड़ी से जाने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एक मेडिकल का एक शिलान्यास करेगा CM, जो रायपुर में बनेगा। नेक्स्ट बात मिल ली जगह बोले कौन? वो मेरा सर्कल ऑफिस हेडक्वार्टर रायपुर, जो CM साहब ने घोषणा किया, उसका इनॉग्रेशन करेगा आज। सर्कल ऑफिसर का पोस्ट रायपुर में आज 4 में आज के दिन से शुरू होगा, उसका CM साहब इनॉग्रेशन करेगा यहाँ में। उसके बाद एक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा जो में स्थापित किया जाएगा, जिसका भी शिलान्यास ऑनरेबल CM साहब यहाँ से करेंगे। तो अभी CM आ रहे थे, आपको क्या लगता है क्या होगा? खुशी लग रहा है हम लोग यहाँ में आने से, और डेवलप करा सकते हैं ना देख के। हम लोग यहाँ में कुछ भी नहीं, नौकरी देगा कुछ भी नहीं है, इतना बस्ती गठिया है ना, तो आने से कुछ बना देगा होगा, देखिए रोड बना देगा लगता है। हाँ, रोड बना देगा। देखो ना वहाँ में रोड भी पूरा गिर गया, उसको भी बना देगा। आज लाइट आ रही है? हाँ आज लाइट है। हाँ, आज लाइट आ रहा है पूरा दिन भर दे रहा है? हाँ, कभी कभी आता है, हम लोग यहाँ में डेली लाइट नहीं आता है। काम होता है यहाँ। एक दो पॉइंट ये शिफ्टिंग अभी चल रही इसको लेके ना, और इम्प्रूवमेंट ऑफ ये नेटवर्क ना, और वाटर सप्लाईज और इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये नहीं माने बोलने से, नहीं माने बोलने से और आवाज़ उठाएगा। ये होप है, वो मतलब अभी वो भी करना पड़ेगा, अभी तो देगा In this regard, in fact, to bring up this digital connectivity across Arunachal state, especially in the border areas, I must thank Honorable Prime Minister Narendra Modi Sahab, who has wholeheartedly sanctioned around 980 4G towers across Arunachal.
सो अभी उसका टेंडरिंग हो गया है एंड एयरटेल कंपनी हैज़ गॉट ए टेंडर. वेरी सून द सर्वे टीम विल रीच ईटानगर एंड दे विल सिट विद आवर डिपार्टमेंट IT and communication, wherein I have requested all the deputy commissioners of all the districts that wherever you have problems of network, especially in digital connectivity, data connectivity. So data internet is one of the backbone of connectivity these days in the modern era. तो जहाँ जहाँ सर्विसेज नहीं है डिजिटल का उसको भी रिपोर्ट देने के लिए तो हम लोग इस बार 4G टावर्स सब जगह में प्रोवाइड करेंगे. आई थिंक इन कमिंग डेज यहाँ तातो में भी लग जाएंगे, मोनीगांव में भी लग जाएंगे एंड मेचुका में भी एज वेल. एंड आई एम सैड टू सी कि इतना जो प्रोग्रेस होना चाहिए था वो उतना नहीं है. एंड ऑफ ऑल द 3 पैकेजेस ओनली 2 हैज़ बीन स्टार्टेड एंड 1 इज़ येट टू स्टार्ट. और जहाँ में काम स्टार्ट हो गया वहाँ भी मशीनरीज वगैरह भी कमज़ोर है. तो एनीवे आई विल टेक अप दिस मैटर विद द कंसर्न अथॉरिटी विच इज़ द बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन. और दूसरा आज इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक नया सर्कल ऑफिस भी यहाँ पे सैंक्शन करके नोटिफिकेशन हैंड ओवर कर दिया. रापुम सर्कल जहाँ अपना रामो जो जनजाति है वो लोग बसे हुए हैं. और दूसरा चीज़ जो था यहाँ में क्योंकि बीइंग द हेडक्वार्टर ऑफ शियोमी तातो में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यहाँ पे बिल्कुल नील है यहाँ पे. तो इसके लिए भी अभी लोगों को थोड़ा एजुकेट करना था हमें कि अपना लैंड जब तक क्लियर नहीं होगा गवर्नमेंट कान ब्रिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उसके लिए मैंने आज पब्लिक को भी कहा कि 3 साल लगा दिया आप लोग ने लैंड को पूरा क्लियर करने के लिए. सो नाउ दे हैव क्लियर द लैंड एंड गवर्नमेंट हैज़ द लैंड. तो इस बार से मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इस्टेब्लिशमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी मैं यहाँ पे सैंक्शन करके दूँगा. So the CM visited today and lots of promises, lots of expectations. He talked about internet and even the MLA of the area promised a lot about the further development. But let's see what happens. The last time when he visited was Chief Minister Pema Khandu visited on 2018 and it's almost like 3 years now. And as you have seen already that the condition of schools and everything, so but it seems promising as of now. So we are heading towards Mechuka. I think that's it for Tato. We'll see what's the condition out there in Mechuka because most of the HODs are there in Mechuka and according to the people the DC stays there. He rarely comes here, so I hope we give you the glimpses of it. Why is it so? In the district headquarters, we don't have any quarter. Okay. And there are absence of rent houses also. And of course, we don't have sufficient staffs. In district headquarters, we have only one LDC. So, we are taking the support of ADC office Mechuka to run the administration, to run the district administration in this district. Yeah. So, sir, we have been hearing news that IB has been allotted to you to stay there, right? And since the IB has been allotted to you, nobody comes and go there, but you don't visit often. So, what's your take on that, sir? That's totally wrong. There is an IB, and IB has 3 rooms. In one room, Deputy Commissioner stays. In other room, SP stays, and one another room is for all the staffs. Yes, in Tato, I visit 2 times in a week, so that we can do. Since there is no quarter there, and simply you cannot put the Deputy Commissioner only in the quarter, na? He will have to be assisted by many staffs. There is, as I said, only one LDC is there. So I'll have to take the support of ADC office Mechuka only to run the district administration. We've been hearing कि ST certificate लोग में sign करने के लिए they have to wait for a month sometimes. Who said that they do have to wait for a month? This is totally fabricated and totally exaggerated. Yeah, so it's not like this. My circle officer, he always go. You see, in a week he goes there. And in a week I go twice, and how come they have to wait for a month? Yeah, this is totally exaggerated. This is unacceptable. No. So coming to that point, we also visited the school area around there, and there are already structures there, but it's all totally dilapidated.
the girls' hostel is there, but teachers are staying there. Concern, you also stated that infrastructure, lack of infrastructure. Yeah, ho jata. There's this basic thing, the toilet out there. There's no segregation of toilet. Like since there is no segregation of toilet, the girl child out there who studies in the 7th, 8th standard, who are just hitting their puberty, they have to go all the way to their home, be there and come back. You know, don't you feel that there's a loss of their education time out there? What's your concern in regard to that? No, you see, in fact, sanction was done, but during the construction there were some lapses. It was not done as per the specification. So that's the problem. Toilet are there, but it was not built as per the specification. So that's the problem. So, yeah. So there's this hues and cries for the internet facilities as well, but we also heard from the Khandu sir that they're going to work upon it. Yeah. But what are the game plans now? Abhi kya kar sakte hain? Ask around the kids out there, do you know that ki wahan smart class hota hai, the projector? They were like, what is projector? They don't know at all. And there's this kids out there who class 1 se leke 7 tak hai, but during that meantime he just saw once kya para hai maths formula, and then he don't even remember anything. So what's your concern on that as well? First the requirement is road, then only other things will follow. So that is our game plan. We are working on it. And as I said, जो infrastructure का बारे में, education का बारे में, the government has sanction money. तो we'll start with that. And जो earlier जो गलती था, जैसे as I said, तो वो स्पेसिफिकेशन का मुताबिक ना बनाने का वजह से ऐसा हुआ है. People also they compromise a lot. Then, as Honorable Chief Minister said, that your profit margin is also included in that. If it comes to no, they should not think कि government सरकार सब कुछ करेगा ना. They have also responsibilities. उसका responsibilities क्या है? उनका responsibilities ये है कि वो भी काम को अच्छा से करे. Contractor will be chosen from among them only, na? They won't come from outside. So they should also be proactive in the development process. So as you said that you visit twice a week, right? Yeah. I mean, is there enough time to interact with the locals and everyone, to listen to the problems and everything? Yes, why not? People come to us and we redress their grievances. When can we expect a proper running Tato headquarters, right? This will take time. This will take time. Okay. Because the road will have to be constructed. Then slowly the infrastructure will be built, and then only this will. It's not it won't come in 2 or 3 years. There's this demand that the HODs of the Mechuka should be shifted to Tato, right? And then the ground reality is as such that compared to Mechuka, Tato is way behind. We can also understand the fact that it's a very new district. So what is the next step that government is really taking to sort of make it little better for the people out there? See, if we do a reverse engineering, we got the district in 2018. So when we got the district, I wanted to create a kind of makeshift infrastructure for the deputy commissioner and the SPs, but there was some local issues where we could not do it. And right after that, the government has sanctioned fund for infrastructure development, like mini secretariat and for the quarters for the HOD. But we had to surrender it 3 consecutive financial years. So because then we did not get the land clearance and the land notification due to some local problems. So I've been having meeting with the local land advisory committee, on and off. The deputy commissioner has been always engaging with them. So finally, last April only we got the clear notification about the land. So you must have visited yesterday, the road to the proposed district headquarters foundation stone has been laid, and we are preparing the mini secretariat design, drawing and DPR. So funds are there. So once we process it, we'll get the funds. So it takes time. We cannot para-drop something, and then everything is glorious and everything is good. So like I said, Rome was not built in one day. It takes time. We need to have a little patience. And now, why I chose Tato as a district headquarters? And I was telling other people, I could have always said Mechuka, because we have some basic minimum facilities. But I chose Tato because it's centrally located, accessibility-wise.
and it's a new place. So if the district headquarters comes up there, the infrastructure will develop and the local economy will also develop. So there should be equitable development in all the places. So Manigam also we created EDC, independent headquarters now, and the Ramo area we have created a circle headquarters, so that the development and the administration goes to the doorstep of the people. That was our attempt. Like you said, it's not CUME district alone. I would say 60% of the places in Arunachal are devoid of internet connectivity, rather digital connectivity. So we keep raising this issue, we keep writing to the central government. And otherwise also I was working on a new pilot project, through air fiber to get internet connectivity to all the places in CUME. This is under process. So whichever comes faster, we will implement that. What would be the tentative dates? See, these are very technical thing, because since but what are the target? What are the targets? So we want to do it not this year. This year is what? It's almost over. Just not even a month. But by next year we should be able to do it. So let's see, because internet we understand that is very important, because connectivity was, because everything was on digital platform, So we need to understand not only for entertainment, it's for education, it's otherwise for health, also education sector also. Everywhere we are dependent on internet. So since the Chief Minister has already announced that how many towers for the 4G towers will be installed, he said very soon we're going to get. But it's difficult to tell you the timeline. Otherwise you will again come and ask me, आपने बोला था, January बोला था, February कब होगा? No, just the tentative I'm asking. So it's difficult to say any tentative thing, but we are hopeful that things will be resolved very soon, and sooner the better. We are heading to one of the Gambara's home, and between the cacophony of the fight for internet, electricity, better infrastructure, he is living his life, and we'll show you how. नहीं है ये क्या? Hi. Kace mai. Kakat ni ya bunda. Bunda kace tu na. Nam kace mai. Ubu kan ku bai. Hi. Nam ka kidu bai. Nam ka ku de. इसका नाम क्या था? Gagi. So this is Gagi's home. Gagirida's home. And we heard that there's no electricity and he don't care. This is how he's been living most of his life. साथ में खाओ बोला कुछ अपना तरफ से. Sakam to ducho. Oh ingin? Ingin. Electricity do electric. Aduh, lako yo tunggu na ma. Lako na adu lako na ma. Ngosi kuna. No ikaw kuna. Internet chendo internet. Apa? Internet chendo mobile kadu internet chendo. Cema. Oh, cema. Mobile ka chendo. Ka chendo. Amiam kadu. Adu ka pangkuma. Ma ako. Parang nanam de dindung ka tolo de. बात करने की बात है Ko ako ka mabrada tu bai. बात बेतन को Ka tindu. Tato hilo amia ni ku ya chu no kuma bai ja Ke go kuma ba. no ogu mu du ngadu la namme ni ku bi gela no ogu mu du ai ude ta Kuliam de porinamiam de. Rolong poritolanka. Agadu na. Pori balo. encourage करता पैसा देता पढ़ने लगा अब मुर्को तो मुर्को जीते के पूरी बात पागल में ये बोला तो जीवात के लगे तो गोमिन में आला उसी दगम काने के कूला तो तुझे का टेम्पे का हदुआ हजार सिस्टम में तो अदर को आला उसी दगम का तो दोनों सिजोन में है के Gidai sam sinyonya mamu tu daka. Pema kan do chief minister nam campaign Arunachal chief minister. Aba, kela de pema kan do la bakai. Hegde kacapa. Ada sengke paku. Hang pema kan do ta. Ai ide kumula. La sana lam jige bala baka.
Tepe. Tepa. Rukama popo mo kay na ko na content na ma. Ma te me ma to pa ku sikula ko ay do nyo ko ma ta si. Ni kamay na ako no ka pa do ko ka no. Oo. Ni kam na kam no ka po dum kan do ka. Ka po dum kan do. Ka po ku ma ka ne ano siya ko. Ato te baba si ku ka tala. Abi dolo ka ba ho. Dagra bu mo ni na ka ba do na. Ni ka te laga ba. Iskuli ako ka dugam. Ngoda ayat. Alam ba purito lang ka. Ano? Mahitaro ka dugam mo bu mo na do na. Tikar ka dugam si no. Bolo ayun ka. Ato bolo tisira ala do. Awam yung puro nilak ka do. No, atin tikar ka do no. Gusto ka na ka mo do. Hagama mo de. Kama hagaruba mo be tunda ka. Ata si tunda ka. Nakali ba sa do. Gusto ka ba jab ka kumai. Puri ayam ko na. Ano? Puri yung kento mo lang na. Ano? Nyam na ka. Aldo. Aldo ay. Alvin pa. Taray na. Ngokma me mai. Dolong ka ba ba? Ubi apna lene bol raha. Basti ke level. Ato Aldo. Alvin pa. Iyo ka kuba. So we're leaving Gagarida's home with this organic sweet potato that he brought from his field. It's quite overwhelming actually, though there was this communication gap. He speaks Adi, I speak Nishi, so we were sort of trying to come to a common ground to communicate. This is overall the condition all in Arunachal. That's why we speak Hindi. But it's quite interesting, as I said before, that between this chaos and cacophony of people fighting for internet, the land and road, better connectivity, this person is living off guard without such facilities. And really, it was quite a privilege to meet one of the oldest guy in the village, and he's like quite content with his life. He said, I don't want anything with my life. I am happy where I am, and best wishes to the future generation and all. That's it. हमको मत करा क्या फुटबॉलर है ये अय्या Olé!